Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video, lecture 9 of reduction of general equation of second degree. In the last lecture we had studied case 3 पढ़ लिया था हमने, जिसमें कि एक रूट जो है डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का 0 था और k जो है 0 नहीं था, वैल्यू ऑफ k इज नॉट 0. एक एग्जाम्पल उस पर और करते हैं और फिर नेक्स्ट केस करेंगे. सो इस एग्जाम्पल में नेचर ऑफ द सरफेस फाइंड आउट करनी है. एग्जाम्पल है 3x² प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 12yz प्लस 6zx प्लस 4xy प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन से वैल्यू कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 3, b इज 4, c इज 9, h f g h. So f is 12 upon 2, g is 3, 6 upon 2, h is 4 upon 2, u is 4 upon 2, v is 6 upon 2, w is 1, 2 upon 2 and d is 1. So the discriminating cubic equation is determinant से दे सकते हैं a minus lambda, b minus lambda, c minus lambda and fgh. इसे एक्सपेंड कर लेते हैं. 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, 9 माइनस लैम्डा माइनस 36 प्लस 2 इंटू 18 माइनस 18 प्लस 2 लैम्डा. बिकॉज हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो 2 के लिए होगा 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 9 माइनस लैम्डा प्लस 3 के लिए होगा 6 इंटू 2 एंड देन 4 माइनस लैम्डा इंटू 3. सो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 लैम्डा कैंसिल हो गए. नाउ वी फर्दर सिंप्लीफाई इट. सो 3 माइनस लैम्डा 36 minus 4 lambda minus 9 lambda plus lambda square minus 36 plus 4 lambda plus 9 lambda is equal to 0. So this value comes 3 minus lambda and lambda square minus 13 lambda and plus 13 lambda. So 3 lambda square minus 39 lambda minus lambda cube plus 13 lambda square plus 13 lambda is equal to 0 and lambda cube minus this is 16 lambda square and this plus 26 lambda. Sign has been changed because this was with minus. So we have multiplied by 1 is equal to 0. We take lambda common, lambda square minus 16 lambda plus 26 is equal to 0. So lambda is equal to 0. Lambda is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So we get lambda is equal to 8 plus minus, because this is lambda is equal to 16 plus minus under root 16 square minus 4 into 26 upon 2. So we get lambda is 8 plus minus under root
this becomes 8 square minus 26. If we take 4 common from this under root 4, which is 2, so we get 8 plus minus under root 38. So these are lambda's root. So 3 roots, 0 and these 2. सो हमें अब LMN फाइंड आउट करने हैं जो कि DCs हैं. DCs फाइंड आउट करने हैं ऑफ द एक्सेस corresponding to lambda is equal to 0. सो हमें पता है कि DCs निकालने के लिए इक्वेशंस हम बनाते हैं ABC FGH LMN से मल्टीप्लाई करते हैं and then we put 0. So we get 3 equations from here. First is AL plus MH plus GN is equal to 0 और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाती है. If we put values of L, H and G, 3L plus 2M plus 3N is equal to 0. Second equation है HL, because हम multiply कर रहे हैं rows को corresponding value से. HL plus BM plus FN is equal to 0. यहाँ से equation आती है. This is equal to 2L plus 4M plus 6N is equal to 0. So this is equation 1. This one. This is equation 2. Now third equation is GL plus FM plus CN is equal to 0. The third row with corresponding LMN. So यहाँ से equation आएगी 3L plus 6M plus 9N is equal to 0. This is equation 3. So we solve 1 and 2. 1 and 2 को solve करें तो ये हम Cramer's rule से करेंगे. So L is equal to M is equal to N upon L के लिए करेंगे तो ये होगा 6 into 2 12 minus 12 M upon 3 into 2 6 minus 6 into 3 18 N upon 12 minus 4. So L upon 0 is equal to M upon minus 12 is equal to N upon 8. And we can write this as further L upon 0 is equal to M upon minus 3 is equal to N upon 2 and it gives 1 upon 3 square plus 2 square 1 upon under root 13. So K की वैल्यू होती है UL plus VM plus WN. We put the values इसमें रखी. So UVW हमें पता है 0. LMN भी पता है अब 3 minus 3 upon root 13 plus 1 into 2 upon root 13. So ये आया minus 7 upon 13 under root. So required equation हुई. Equation is lambda 1 x square plus lambda 2 y square is equal to minus 2 kz. So we 2 kz with plus sign. और lambda 1 lambda 2 जो है non zero root है of lambda. So 8 plus root 30 x square plus 8 minus root 30 y square is equal to 14 because 7 into 2 14 upon root 13. राइट हैंड साइड ले गए तो साइन पॉजिटिव हो गया. ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन है. फर्स्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, क्या फॉर्म्स होती हैं उससे डिसाइड किया. नाउ और इसमें हम और ये देख सकते हैं. कि ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड हैं तो
और प्रिंसिपल पैराबोलॉइड कौन से हैं इसमें, वो हो जाएंगे x प्लस √38x² इज इक्वल टू 14z अपॉन √13 and 8 minus under √38 y² is equal to 14z upon √13 and litera recta जो कि लेटस रेक्टम का सिंगुलर है ऑफ दीज प्रिंसिपल पैराबोलास, जो कि प्रिंसिपल पैराबोला ये दोनों हैं, तो इनका लेटरा रेक्टा होगा 14 अपॉन अंडर √13 देन 8 प्लस √13 डिवाइड कर दिया, मीन्स x² is equal to this much in form in z, so this constant or coefficient of this, and 14 upon, here we will divide by 8 minus √38. So these are the letra rectas of this first one, that is x² one, and then second is for y², respective principal parabolas. केस 4 जो है वो when one root of discriminating cubic is 0 and k is equal to 0. पहले केस में k 0 नहीं था, रूट एक 0 था. यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट. 2x² प्लस 5y² प्लस 2z² माइनस 2yz प्लस 4zx minus 2xy plus 14x minus 16y plus 14z plus 26 is equal to 0. और इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से. सो a is 2, b is 5, c is equal to 2, f is -1, -2 upon 2, g is 4 upon 2, and h is -2 upon 2, u is 14 upon 2, v is -16 upon 2, w is 14 upon 2, and d is 26. So discriminating cubic equation will be a minus lambda, b minus lambda, c minus lambda, f g h f g h. we expanded it, इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -1 इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सो -1 इंटू 2 -2 एंड -1 एंड 2 माइनस लैम्डा. सो -2 प्लस लैम्डा प्लस 2, इसमें होगा -1 1 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 लैम्डा is equal to 0. So we have here, this is plus 2, so this is cancelled out, and 2 minus lambda, this is 5 minus lambda. So 5 into 2 10 minus 5 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus lambda, and this is -9. So -18 and plus 4 lambda is equal to 0. So we can write down 2 lambda square minus 7 lambda is 14 lambda, plus then we have this -1 is also there,
So we will have 9 with plus sign, so we will have plus 18, and so with 2 we have done. Now with lambda, minus 9 lambda, and then with 7 lambda square, and this will be plus minus lambda cube. Minus lambda cube, then we have plus lambda, and minus 18 plus 4 lambda is equal to 0. So we can write down lambda cube, then lambda square, plus 7, and this 2. So minus, this is with plus, so it will become 9 lambda square, and lambda 14, and 4 means minus 10, and minus 19, and plus 1. So minus 18, it means plus 18 lambda, and 18 and 18 cancelled out, there is no other constant, so this is 0. So lambda square minus 9 lambda, and here it will be plus 18. So this is equal to 0, so this gives lambda is equal to 0, and root of this will be 6 and 3. So lambda minus 3, lambda minus 6, so lambda is 3 and 6. So 3 roots, 1 is 0 and 2 non-zero. Now we have to find out DC's element of the axis. DC's of the axis element corresponding to lambda is equal to 0. So we know A, B, C, F, G, H, इसे हम क्या करेंगे, एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग रो को और 0 रख देंगे. सो AL प्लस HM प्लस GN इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आता है 2L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल टू 0. अगर हमने A, H और G की वैल्यू रखी, सेकंड हो जाएगी HL प्लस BM प्लस FN, BM प्लस FM, FN इज इक्वल टू 0. और इसमें अगर हम H, B और F की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो माइनस L 5M माइनस N इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 हो गई, एंड यहाँ थर्ड आएगी GL प्लस FM प्लस CN इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें, सो माइनस 2L माइनस M प्लस 2N इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 3, LM N की वैल्यूज़ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं. सो L अपॉन minus 1 minus 1 1 minus 5 into 2, so minus 10. M upon it will be minus 2, that is 2 into minus 1, and then 2 into minus 1, that is minus and minus 1 more, so plus 2. N upon will be 5 into 2, 10 minus, so 1 plus and then minus. So this comes L upon
माइनस 9 इज इक्वल टू m अपॉन 0 इज इक्वल टू n अपॉन 9. So from here we can find out lmn. So minus 9 we divide it by 9, so minus 1 m upon 0 n upon 1. और अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 1 अपॉन रूट 2. सो lmn निकल गया. k की वैल्यू होती है ul प्लस vm प्लस wn. वैल्यू सब्सटीट्यूट की 7 माइनस 1 अपॉन रूट 2, सेकेंड 0 आ जाएगा, प्लस थर्ड होगा 7 1 अपॉन रूट 2. सो ये 0 आ गया. तो अब k भी 0 है और एक रूट भी 0 है इस सरफेस का. सो सरफेस हैज़ नो यूनिक सेंटर. कोई इसका यूनिक सेंटर नहीं है. तो क्या है अगर यूनिक सेंटर नहीं है? ये लाइन ऑफ सेंटर्स है इसका. इट हैज़ a line of centers which is given by, वो कहाँ से हम निकाल सकते हैं लाइन ऑफ सेंटर्स? अगर हम given by the following equations, by any two following equations. 3 इक्वेशन है जो कि हम obtain करते हैं फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके 0 रखें, या डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 1/2 डेल एफ अपॉन डेल जेड 0. ये 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को लेकर हम लाइन ऑफ सेंटर्स फाइंड आउट करते हैं. सो हम अगर f जो है उसे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसे हाफ 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 7. आप इक्वेशन यहाँ लिखें. सो ये जो इक्वेशन गिवन है उसे हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई. तो ये था 4x एंड देन x के साथ था 4zx. सो एंड y भी था हमारे पास. सो 2xy है. सो उसे डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस वाई. देन z वाला टर्म है 4zx, उससे हमने किया तो 4z आ गया डिवाइड बाई 2z एंड 14x इज 14 और 2 से डिवाइड किया तो 7. इट इज़ 0. नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस एक्स प्लस 5y एंड माइनस z माइनस 8 इज इक्वल टू 0. थर्ड इक्वेशन होगी. आप ऑर्डर जैसे पहला टर्म इसमें 4z है डिवाइड मीन्स 2z है, तो एक्स वाई जेड का ऑर्डर आप लिख सकते हैं और वैल्यू को उसी जगह पे रख दें जहाँ पर कि वो आ रही है, मीन्स ऑर्डर के हिसाब से. प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 4 we know that x y z we are going to write, so we can write first this term, then this term and then this term. This is 5 and 6. तो अब हम इन्हें 4 एंड 6 अगर आप इक्वेशन देखें तो ये सेम है. 4 इक्वेशन इज इक्वल टू 6. इट मीन्स 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड. इसका मतलब हमें एक वेरिएबल को ही रैंडमली आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी पड़ेगी. आर्बिट्रेरी अगर हम वैल्यू देते हैं तो z को 0 दे दी. तो पहली 4th इक्वेशन से आया 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0. एंड नेक्स्ट 5th से है माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड को. सो इसे 2 से, तो ये ऐसे ही रही 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस 2x एंड प्लस 10y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया. सो 9y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 1. अगर हम y की वैल्यू रखें यहाँ तो x हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 6. सो x इज इक्वल टू माइनस 3. तो सेंटर क्या आ गया?
-310, और हम कह सकते हैं एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन द लाइन ऑफ सेंटर्स -310 है। सो म्यू हम निकालना है जिसकी वैल्यू होगी यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस डी। सो यहाँ पर वैल्यू है -7 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 26। सो सिंप्लीफाई करें तो ये -21 हो गया और ये 26 है एंड दिस इज 8। So 26 and 8 is 34 minus 21 is equal to 21 minus 8 and plus 26. So this gives -3 and this is 3. -3 into minus. So mu is this. So the required equation lambda 1 x square plus lambda 2 x square is equal to mu, और lambda 1 lambda 2 क्या है, जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, रूट्स हैं। 3x square plus 6y square is equal to 3. सो हम लिख सकते हैं x square plus y square is equal to 2y square is equal to 1. ये इलिप्टिक सिलेंडर है, इलिप्टिक सिलेंडर, और आपको पहली फॉर्म्स याद होंगी तभी आप ये लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू आई म्यू इज इक्वल टू -21 -8 प्लस 26। सो ये -3 के इक्वल आ गया एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, और इसमें वैल्यू रखें लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, रूट्स ऑफ लैम्डा जो कि नॉन ज़ीरो हैं, इज इक्वल टू 3, म्यू इज 3। सो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्टिक सिलेंडर की इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर लिखना चाहें, इक्वेशंस टू द एक्सिस, तो पहली बात एक्सिस क्या होगी, एक्सिस जो है ऑफ दिस सरफेस वो लाइन ऑफ सेंटर्स होगी, लाइन ऑफ सेंटर्स। और लाइन ऑफ सेंटर्स हमने क्या निकाली नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में, ये जो इक्वेशंस निकाली 4 5 6, और हमने 4 5 क्योंकि 4 एंड 6 आर इक्वल, सो 4 इक्वेशन 4 एंड 5 जो कि क्या है नॉन सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में हम सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक पढ़ते हैं, सो ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है, नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशन। सिमेट्रिक हमें चाहिए, सिमेट्रिक इक्वेशन के लिए मीन्स वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होगी और जो कि सेंटर जो कि -310 से पास होगी, और एलिमेंट हमने निकाली लिए थे, इसके एलिमेंट है -1 0 एंड 0। So this will be x plus 3 upon -1 is equal to y -1 upon 0 is equal to z minus 0 upon 1. So ये इक्वेशन जो है सिमेट्रिकल फॉर्म में हो गई, एंड जो एक्सेस है वो पासिंग थ्रू दिस सेंटर, एनी सेंटर, एंड डीसीज जो हैं वो इस इक्वेशन से दिए जाएंगे। सो ये क्वेश्चन इतना ही हमें करना था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज
ये एग्जाम्पल में स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दी गई है, ये इक्वेशन है, इसकी हमें नेचर फाइंड आउट करनी है। सो सिर्फ स्क्वायर करेंगे, और अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। उससे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के और वाई एंड जेड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले उस इक्वेशन को देखते हैं। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देन वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एफ जी एच एटसेट्रा। वाई का हो गया, जेड देन वाई जेड ए सी एक्स जेड then minus 2ab xy minus 1 is 0, so a is c square plus b square, b is a square plus c square, c is a square plus b square, f is minus bc, g is minus ac, h is minus ab and d is equal to minus 1. So dc discriminating cubic equation a minus lambda, so b square plus c square minus lambda, b minus a square plus c square minus lambda, c lambda a, c minus lambda a square plus b square minus lambda, f minus bc, g minus ac, AC minus AC and minus AB is equal to 0. We open it, b square plus c square minus lambda, a square plus c square minus lambda into a square plus b square minus lambda, this minus this, minus ab into a b c square minus plus ab into a square plus b square minus lambda minus ac ab square c plus ca square plus c square minus lambda is equal to 0. So we further open it, b square plus c square minus lambda into a4 plus a square b square minus a square lambda plus c square a square plus c square b square minus c square lambda minus lambda a square minus lambda b square plus lambda square minus b square c square, then minus a square b square c square minus a4 b square minus a square b4 plus a square b square lambda and
minus a square b square c square minus a4 c square minus a square c4 minus c square a square lambda is equal to 0. Now we further multiply and then open this. It is b square a4 plus a square b4 minus a square b square lambda plus a square b square c square plus c square b4 minus c square b square lambda minus lambda a square b square minus lambda b4 plus lambda square b square. This is what we are doing, just multiplying the first two brackets and rest is same. So first we are multiplying by b square, then c square, and then by minus lambda. So lambda square b square minus b4 c square plus c square a4 plus a square b square c square and minus a square c square lambda plus c4 a square plus c4 b square minus c4 lambda minus lambda a square c square minus lambda b square c square plus lambda square c square minus b square c4 minus lambda a4 minus lambda a square b square plus lambda square a square minus lambda a square c square minus lambda c square b square plus c square lambda square plus lambda square a square plus lambda square b square minus lambda cube plus lambda b square c square, then minus a square b square c square minus a4 b square minus a square b4 plus a square b square lambda minus a square b square c square minus a4 c square minus a square c4 plus c square a square lambda is equal to 0. Now we have to club the terms, so it is not easy to write them. What we do, we write first lambda cube term with minus sign, so minus lambda cube, then we add terms of lambda square, then we have terms of lambda, and then we will have the constant terms. So we will start from first and we keep writing. So there are many lambdas, so here we write b square a4. From first term we have started writing, and wherever term will come we will put there b4 plus, then this term is with lambda, so we write here a square, then next is a square b square c square plus c square b4 minus, now this is c square b square, then minus a square b square, then minus b4, this is in b4, then lambda square, so b square minus b4 c square plus c square a4 plus a square b square c square, then this is lambda minus a square c square plus c4 a square plus c4 b square minus c4 minus a square c square, all these lambda,
then minus b square c square, this is lambda square, plus c square minus b square c4 minus a4 minus a square b square, then we have lambda square, then this term again lambda square lambda square lambda square lambda lambda so all terms we have written, and this is equal to 0. Now we see twice of, so we take 2 common, and here we see what happens. We cancel the terms, whatever we can cancel. B square a4 a square b4 c square b4 c square a4 c square a4, then we have this minus, this is plus c4 a square, so all are cancelled out, c4 b square, so nothing is there in constant, and here we see what we can remove, a square b square c square b square b square c square, then c square a square, and others are in negative, all negative, so cannot be cancelled out. So we can write down lambda cube minus 2 lambda square a square plus b square plus c square, and here it is minus lambda, and this will become plus because minus will take common and multiplied by minus, lambda a4 plus b4 plus c4 and 2 c square b square, then 2a square c square and 2a square b square. So we can write down so we take lambda common, so we get roots of lambda, because this is lambda
minus a square plus b square plus c square whole square so this gives lambda is equal to a square plus b square plus c square 2 times, means second also a square plus b square plus c square. So these are the roots of lambda. So lambda 0 है is equal to 0. This f is surface of revolution. Lambda 0 and 2 roots equal. So surface जो है वो given quadratic है और is a surface of revolution. जो गिवन सरफेस है क्वाड्रेटिक है एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन है क्योंकि दो रूट्स इसके इक्वल हैं. अब हमें डीसीज निकालने हैं ऑफ द एक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, जो कि हम दे सकते हैं सेम इक्वेशन AL plus वैल्यूज रख दी LHG की, सेकंड में HBM की, एंड इसमें GF एंड C, GF एंड C की, GF एंड C की. सोल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को. सो L दिस हो गया AB and BC. So AB square C minus minus plus, then this will be CA into C square plus A square and M upon A C this into this A square this into this A square BC plus BC, then B square plus C square and N upon this into this minus this into this. So this is B square plus C square into C square plus A square minus A square B square. So we take common AC, A square plus B square plus C square, M upon BC, A square plus B square plus C square is equal to
n upon c square a square plus b square plus c square. So we can write down L upon A, M upon B, and N upon C. So this will be equal to 1 upon under root a square plus b square plus c square, and k is equal to ul plus vm plus wn. So we know these values lmn abc, and L will be a upon under root a square plus b square plus c square into u. U is equal to UVWR 0. Because there is no term of UVW, so the whole thing is 0. K is equal to 0. So no unique center. It means lines of center. And for lines of center we will be solving the equations. 1 by 2 del f upon del x is equal to 0. 1 by 2 del f upon del y is equal to 0. 1 by 2 del f upon del z is equal to 0. ये तीन इक्वेशन में से कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. So we will be getting 1 by 2 del f upon del x will give b square plus c square x minus a by minus c a z is equal to 0. This is 5, and minus a bx plus c square plus a square and y minus b c z, this is equal to 0. 6th equation. Third will be del f upon del z. So you can just do the partial differentiation and divide it by y. तो हम इसे दो इक्वेशन z is equal to 0 रखते हैं और लास्ट इक्वेशन that is 7th and 6th में, so cax minus bcy is equal to 0. इसे b से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी है 6abx plus c square plus a square into y is equal to 0. इसे c से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएंगी ये माइनस ए बी सी एक्स माइनस बी स्क्वायर सी वाई इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी इंटू वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन आएगी बी स्क्वायर सी वाई इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी इंटू वाई. तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या y इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी. सो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा टू हैव दिस इक्वेशन 0, बिकॉज अगर हम इसे इस तरफ ले आए तो y कॉमन ले लेंगे इनटू दिस टर्म to have 0, either y is 0 or this 0, either y 0 or this 0. so अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम x की निकाल सकते हैं. x 0 हो जाएगा इस इक्वेशन से, एंड z हम 0 ले ही चुके हैं तो पॉइंट आ गया 0 0 0. सो कोई पॉइंट, एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा जो है
वो हमारे लाइन पर होगा on the line of centers, on the line of centers वो क्या पॉइंट होगा 0 0 0. So any point अल्फा बीटा गामा ऑन द लाइन ऑफ सेंटर्स 0 0 0 से डिपिक्ट हो सकता है. तो म्यू जो है वो वैल्यू होती है माइनस यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस डी. सो ये हमारा डी की वैल्यू 1 है, बाकी तो ये 0 हो गए. सो दिस इज 1. इसलिए हैंस द रिड्यूस्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हैंस द रिक्वायर्ड reduced equation is lambda 1 x square plus lambda 2 y square is equal to mu. तो ये हो गया a square plus b square plus c square, दोनों यही वैल्यू है lambda 1 और lambda 2. कॉमन ले लिया तो x square plus y square is equal to 1. mu is 1. सो ये जो है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन है. So this represents a right circular cylinder. और इसके जनरेटर क्या होंगे? with its generator parallel to z axis. और इसके बेस का रेडियस क्या होगा? बेस रेडियस होगा 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. वो यहाँ से आ गया. एंड अब हमें ये तो जो इक्वेशन मिली दीज 5 6 7 ये नॉन सिमेट्रिक इक्वेशन है. अगर सिमेट्रिक इक्वेशन चाहिए तो हमें स्ट्रेट लाइन जो कि 0 0 से पास हो रही है 0 0 0 से. सो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0. एंड एलिमेंट क्या होंगे इसके? एलिमेंट वही होंगे जो अभी हमने निकाले थे, that is a b c अभी हमने फाइंड आउट किए थे. so these are the element values we have substituted. so this is the equation x upon a is equal to y upon b is equal to z upon c. ये जो है एक्सेस ऑफ द सिलेंडर आर, ये है जो एक्सेस ऑफ द सिलेंडर. इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ द सिलेंडर is given by this equation. so यही हमें आंसर चाहिए था. सॉल्व हो गया. थैंक यू. नेक्स्ट